Assalamu alaikum dear students, welcome back to another video. आज हम स्टार्ट करेंगे CS201 फाइनल टर्म MCQs फ्रॉम लेसन 19 to 45. चलें शुरू करते हैं. Number 1. Which of the following function call is called by reference for the following function prototype? Number A. Function bracket and num मतलब कि number. Number B. Function NA ME. A and B both A and B and none of the given options. इसका करेक्ट ऑप्शन है फंक्शन ब्रैकेट एंड नंबर, जिसका करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटर्ड इन स्विच स्टेटमेंट इट्स एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, इंटर फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन. इसका करेक्ट ऑप्शन है एग्जिस्ट फ्रॉम स्विच स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. The operator plus plus and minus 1 used to increment or decrement the value of a variable by 3, 2, 1, 4. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि प्लस प्लस और माइनस माइनस यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कि कितनी वैल्यू ऐड करेगा. ये वैल्यू ऐड करेगा 2 करेगा 1 करेगा या 4 करेगा. तो हमारे पास जो भी हमारे पास हम करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं a प्लस 10. अब जो भी a की वैल्यू होगी तो a प्लस 1 सिर्फ एक ऐड होगा, और जैसे माइनस है तो माइनस भी वैसे ही होगा, सिर्फ एक वैल्यू होगी. नेक्स्ट देखते हैं 4. Each of the following operator is used to assess the value of variable pointed by a pointer. Star operator, greater than operator, double AND operator, logical AND operator, and bitwise AND operator. तो इसका correct option है bitwise AND operator. The value of variable pointed by a pointer. ये जो वैल्यू है वेरिएबल की पॉइंट करता है पॉइंटर के थ्रू, वो कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज एंड ऑपरेटर. क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट देखते हैं हम 5. इन केस ऑफ सिंगल dereferencing, the value of the dash is the address of the dash. Pointer variable, pointer constant, variable constant, constant pointer. In case of single dereferencing, the value of the pointer is the address of the variable. ये हैंडआउट्स में से है, वो डेफिनेशन है. ये अपने देखना है ताकि और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं. द रिमाइंडर मॉड्यूलस का ये है हमारे पास ऑपरेटर इज द डैश ऑपरेटर, लॉजिकल, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड कंडीशनल. ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशन है, ये कंडीशन है. तो ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, मॉड्यूलस का अरिथमेटिक ऑपरेटर. ओके. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? इंट x इक्वल टू 10. तो सी आउट एक्स में हमारे पास क्या प्रिंट होगा? 10 ही प्रिंट होगा, क्योंकि एक्स हमारे पास 10 ही है, तो हमारे पास प्रिंट भी एक्स 10 ही होगा. नेक्स्ट देखें. ये ऐसे तो हम कह सकते थे कि ये 10 है, 10 हम करेंगे सिर्फ 10, लेकिन उसने दिया हुआ सी आउट में x इज इक्वल टू, मतलब कि x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10. ओके. x इज इक्वल टू x की वैल्यू 10. अगर सिर्फ यहाँ पे x दिया होता तो हमारे पास सिर्फ 10 स्टोर होता, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू x, मतलब कि x इज इक्वल टू x की वैल्यू है 10. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. द पर्पस ऑफ यूजिंग सी आउट इज टू रीड द डाटा फ्रॉम कीबोर्ड, रीड द डाटा फ्रॉम फाइल,
write into a file, display information on the screen। वो कह रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में सी आउट इसलिए यूज होता है। सी आउट ना ही हमारे पास वो रीड डाटा करता है कीबोर्ड से, ना ही रीड डाटा करता है फाइल से, ना ही राइट इनटू अ फाइल करता है। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। जैसे कि ये ऊपर उन्होंने हमारे पास दिया हुआ था कि इस कोड की आउटपुट बताएं। और जैसे कि अब ये सी आउट है, सी आउट, तो ये अगर हम इसको हम लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस पे, तो इसका जो हम आउटपुट आएगी वो एक्स इज इक्वल टू 10 आएगी। तो देखें सी आउट यही है कि एक्स इज इक्वल टू 10, जो सी आउट में होगा वो ही हमारे पास आउटपुट आएगी, डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे। वो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट, when an array element is passed to function it is passed by reference। ये डेफिनेशन है रेफरेंस की। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन है रेफरेंस। बहुत इजी है। when an array element is passed to a function it is passed by reference। next, 9, C is a dash language, function oriented language। E is a function oriented language। Number 10, dash of a function is also known as signature of a function। Declaration of a function is also known as signature of a function। ये भी वहाँ पर definition है declaration, ठीक है। Declaration of a function is also known as signature of function। हम ये भी कहते हैं signature of a function। Okay, next, 11. While programming, it is good to provide an easy to understand and easy to use interface। This programming skill is called scalability, reliability, sustainability, usability। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है usability। While programming, it is good to provide an easy to understand and easy to use interface। This programming skill is called usability। Okay. Next, how many dimensions does n-dimensional array has? कि कितनी dimension होती है n-dimensional array में? हम देखते हैं 2n dimension, n plus 1 dimension, n minus 1 dimension या n dimension। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है n dimension। MCQs हमारे पास क्या दिया हुआ था कि वो उन्होंने पूछा है कि how many dimension does n dimension array has। n dimension है तो n dimension नहीं होंगी। अगर यहाँ पे होता है 2n dimension तो हमारे पास 2n dimension आंसर होता। अगर होता n plus 1 dimensional तो n plus 1 dimension होती। n minus 1 dimensional होता तो n minus 1 dimension होती। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर वो आपको MCQs में ये दे देते हैं कि how many dimensions does n minus 1 dimensional array has, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया n minus 1 dimension। हो गया। Next, which of the following function call is called by reference for the following function protocol। हमारे पास रिपीट हो गया आई थिंक सो। यस, हमारे पास ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट, the loop which is most suitable is to be used when the number of iteration is known is called for। While do while all looping process require that the iteration be known। तो सबसे बेस्ट और सुटेबल कौन सी लूप होती है? for loop। for loop is most suitable to be used when a number of iteration is known as called for। Next, 15, in C and C++, the string constant is enclosed in curly braces, parentheses, single quotes, double quotes। In C++, the string constant is enclosed। जब हम string को लिखते हैं तो उसको हम
ओपन और क्लोज इन क्लोज करते हैं तो उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? डबल स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। अगर हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे तो वो हमारे पास प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, एरर आएगा। इस वजह से स्ट्रिंग हम जो भी हम लिखते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। वो तो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर वी डिवाइड्स दिस नंबर बाय 10 एंड टेक्स its remainder, it quotient, it measure the number. In order to get the right most digit of a number, we divide this number by 10 and take its remainder. Okay, इसका रिमाइंडर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 17। What is the correct syntax to declare an array of size 10 of in data type? वो कह रहा है कि इसमें से करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है कि हमने कोई भी एरे डिक्लेयर करना है जिसका साइज है 10, जिसका क्या साइज है 10। तो इन 10 नेम, नेम 10 इंट, इंट नेम 10 या इंट नेम रिकॉर्डिंग। देखें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इंट नो। तो ऑप्शन इसका ये है इंट नेम और एरे से डिक्लेयर किया है 10, इसका साइज क्या है 10। और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो है ही रिकॉर्डिंग। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन ये। और जितने भी सिंटैक्स है वो अपनी अच्छी तरह से देखने हैं, उसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कैलोक, मेलोक एंड रीएलोक। इसका सिंटैक्स ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। इस वजह से ये आपने अच्छी तरह से देखना है ताकि आपका अगर पेपर में आए तो आपको आता हो। नेक्स्ट देखते हैं 18। How many bytes of memory are occupied by array store character string programming? अब वो कह रहा है कि इसमें एरे स्टोर और कितनी बाइट्स हैं। इसमें बाइट्स हम काउंट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये प्रोग्रामिंग के जितने भी वर्ड्स हैं ना, जितने भी लफ्स हैं, इसको हम काउंट करें तो 11 बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 11 है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई और आ जाता है, कुछ और आ जाता है, जैसे कि हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि ई वो ए हम विजुअल लिख देते हैं। ओके, विजुअल हमने लिखा है तो इसकी हमारे पास कितनी बाइट्स होंगी? 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 बारिश होंगी। अब जैसे भी अगर हमारे पास इसमें कोई वो MCQ आ जाता है कि एरे की स्ट्रिंग बताएं, इस वाले कैरेक्टर स्ट्रिंग बताएं, तो वो आपने काउंट करके बतानी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉरी, ओके, नेक्स्ट देखते हैं 19। When the if statement consists more than one statement, then enclosing these statement in curly braces is not void, good programming, ready-made, must. When the if statement consists more than one statement, ये जो if statement है consist, अगर वो consist कर रही है एक से ज़्यादा statement पे, तो हम उसको close दी statement, तो हमने उस statement को close करना है तो curly brackets लगानी मस्ट होंगी, मस्ट। करेक्ट ऑप्शन है मस्ट। नेक्स्ट है 20। Suppose that an integer type pointer contains a memory address 0x22f230। ये हमारे पास memory address है। What will be the new memory address if we increment this pointer by 1? 0x22f231, 0x22f234, 0x22f226 या 0x22f238। सॉरी, अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करें दिस पॉइंटर बाय 1 तो हमारे पास क्या नया मेमोरी एड्रेस आएगा। तो 0x22f
2, 3, 4. Next, number 21. Which of the following, if missing, would result is in infinite recursion in case of recursive function, recursive call, base call, function parameters, local variables? तो इसका correct option है recursive call. Number 22 है whenever we use a library function or a predefined object or micro, we need to use a source file, object file, header file, X file. तो इसका correct option है header file. Whenever we use library function or predefined object on micro, we need to use a header files. Next देखते हैं 23. Which statement deals with the dash type of data? Integer, float, character, both integer and character. Which statement deals with both integer and character type of data? उसमें integer भी होते हैं और character भी होते हैं switch statement में. So next 24. All the template function must have at least dash generic dates to 1. All the update function must have at least one generic data point. Next, 25. Which of the following is the declaration of overloaded pre-increment operator implemented as a number of function class name operator plus int class name operator plus or braces class name plus operator plus int. तो इसका correct option है class name operator plus braces. Next 26. Class is a user defined data type, memory reference value, none of the given option. Class is a user defined data type. Next देखते हैं 27. How many bytes will the pointer int ptr of type int move in the following statement int ptr plus is equal to 3? 3 bytes, 6 bytes, 12 bytes, 24 bytes. int ptr में कितनी bytes होंगी? 12 bytes. Next देखते हैं 28. Which of the following is the correct C++ syntax to allocate space dynamically for an array 10 int? New int 10, new braces में 10 है, new int square brackets में 10, new int ये 10 ये int new 10 या int new braces square bracket में 10. तो इसका correct option है new int braces में 10 square bracket में 10. Next, a pointer is a special variable that contains data value. Memory address is both data and value, none of the given option. A pointer is a special variable that contains memory address. Next 30. Reference value type data the code is written to implement, design, analysis, none of the given option. Implement. Reference value type data the code is written to implement. Next देखते हैं. Operator overloading can be performed through classes, operator, functions या reference. तो इसका correct option है function. Operator overloading can be performed through function. Our operator overloading कैसे perform होते हैं? Function के through. Next. When a value is referred by a normal variable, then it is known as direct reference, indirect reference, partial reference, proper reference. When a value is referred by a normal variable, then it is known as कोई भी हम वैल्यू रेफर करते हैं नॉर्मल वेरिएबल से तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट रेफरेंस. नेक्स्ट बहुत ही इजी है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैलोक, कैलोक एंड मीलोक इसके सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं
तो इस वजह से आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। Which of the following function is used to increase the size of already allocated memory chunk? Which of the following function is used to increase size of already allocated memory chunk? जो increase करता है size, वो कौन सा फंक्शन है जो साइज को इंक्रीज करता है? वेलोप, कैलोप या रीएलोप? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है रीएलोप, जो है वो साइज को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव? इसमें से कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव नहीं है? हैशटैग एरर, हैशटैग डिफाइंड, हैशटैग लाइन या हैशटैग अनडिफाइंड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हैशटैग अनडिफाइंड। नेक्स्ट 35, the stream object C in and C out are included in which header files? iostream.h, fstream.h, isstream.h, ostream.h? The stream object C in and C out are included. जिसमें जिस प्रोग्राम में C in और C out include होते हैं, तो उसमें हेडर फाइल के साथ हम iostream.h include करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। Our loaded delete operator function take the same parameter as an argument returned by a new operator function true. Number 37, when an array of objects is created by dynamically, then there is no way to provide parameterized constructor for array of object true. Next, C is widely known as development language for of dash operating system. Linux, Unix, Windows या Mac OS? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है यूनिक्स। नेक्स्ट देखते हैं 40, we cannot define a function as a friend of a template of class, true या false? we cannot define a function as a friend of a template class, false। हम कर सकते हैं as a friend template class से। नेक्स्ट देखते हैं 41, what will be the value of a and b after executing the following statement? a is equal to 3 और b is equal to a plus plus। तो इसमें 3 और 4, 4 and 4, 3 and 3, 4 and 3, a 3 है, तो what will be the value of a and b? पहले वो b की वैल्यू बताएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से a प्लस 1 करेंगे, a की वैल्यू है 3, 3 प्लस 1 करेंगे 4 हो जाएगी, 4 b में स्टोर हो जाएगी, तो पहले 4 और 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 42 देखते हैं, डैश इज यूज्ड टू ट्रेस द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम एंड करेक्ट द लॉजिकल एरर्स। कौन सा इसका लॉजिक है प्रोग्राम में जो कि लॉजिकल एरर्स को करेक्ट करता है? कंपाइलर, एडिटर, लिंकर या डिबगर? डिबगर करता है। डिबगर इज यूज्ड टू ट्रेस, डिबगर ट्रेस करता है, इज यूज्ड टू ट्रेस द लॉजिकल ऑफ अ प्रोग्राम and correct the logical errors. Next 43 देखते हैं, new and delete are dash whereas malloc and free are dash. Function operator, classes operator, operator function, operator classes. New and delete are dash operator whereas malloc and free are function. Next 45, like member function, dash can also access the private data member of a class. Non-member function, friend function, any function outside class, none of the given options. तो इसका correct option है friend function. Like member function, friend function can also access the private data member of a class. Next 46, which situation should require the use of non-member overloaded operator? The overloaded operator is an assignment operator,
The leftmost operand is an object of a class. The left operand is booled in data type. The operator returns our reference. Right option here is copy. And the leftmost operand is an object of a class. Next, 47. The stream insertion and stream exertion operation are already overloaded for user-defined data type. Built-in data type both A and B, none of the given option. Built-in data type जो भी हमारे पास insertion और extraction operators होते हैं वो already होते हैं built-in data type में. Next देखते हैं. If we define an identifier which the statement hashtag defined EI 3.14 ये हमारे पास phi की value है 3.14 कुछ something then the execution of the program the value of pi dash cannot be replaced. None of the given option. The main constant can be changed by some option. Remain constant. Next, assignment operator is dash associative. Assignment operator is right associative. Next, whenever dynamic memory allocation is made in C is equal to it is pre dash explicitly, implicity, both explicity and implicity, none of the given option. इसका correct option है implicity. Next देखते हैं number 51. The appropriate data type to store the number of rows and columns of the matrix is float, int, or none of the given option. The appropriate data to store the number of rows and columns of the matrix is int, integer type. Next, the function free return that the allocate memory go through calloc and malloc to stack, heap, stack and heap, one of the given option, to super option है E. Next, 53. Width is member function of dash. Cin object, cout object, both cin and cout object, none of the given option. तो इसका correct option है both cin and cout object. Template or not type save. True, false, false. Number 57. A matrix can be composed of int, float, or doubles as their elements. Best way is to handle this. Write a separate class to handle each. Use string to store all types. Use templates, none of the given option. तो इसका correct option है use templates. Next step. In if structure, the block of statement is executed only when the condition is false, when it contains arithmetic operator, when it contains logical operator, when the condition is true. In if structure, the block of statement is executed only when the condition is proved. कि जो भी block of statement है वो execute तभी होगी जबकि condition true होगी. Next, 59. Header file fstream.h include the definition of stream classes ifstream, fstream, offstream. Number B, fstream, ifstream, offstream, cout. यहाँ पे I think we mistake हो गई है यहाँ पे stream नहीं होगा extreme. Next, fstream, cin, cout, none of the given option. तो इसमें correct option है fstream. यहाँ पे भी T missing है. fstream, ifstream, fstream and offstream. Next, assess the data member of structure dash is used. Dot operator, multiply operator, and operator, none of the given option to assess the data members of a structure. Dot operator is be used to assess the data member of structures. Dot operator is used. Next is 61. UF, BAD,
Good, clear, bad, clear. Good, clear. Are the manipulators? True. Are they manipulators there? Yes, true. Number 62. Which kind of function can access private member variable of a class, friend function of a class, private member function of a class, public member function of the class, friend private and public function? Correct option A. Friend function of the class. Next step 63. The return type of operator function must always be void false. Question 44. 64. A friend function of a class is member function, non-member function, private function, public function. Correct option is non-member function. Next is 65. Function implementation of friend function must be defined outside the class. False. Next, the normal source of scene object is file, disk, keyboard, RAM. तो ऐसा correct option है keyboard. Number 67. Which of the following is correct way to initialize a variable x of int type with value 10? Int x or x is equal to 10, int x is equal to 10, int x or x is equal to 10, or x is equal to 10. The correct option is int x is equal to 10. Next is 68. With the function, the compiler automatically detects the past data and generated a new copy of function using past data true. Next, what will be the correct syntax to declare two-dimensional array of float data type? अगर हमने two-dimensional array declare करे of float data type, तो ये हमारे पास इस तरह से declare होगा float array, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और 2 दो दफ़ा two-dimensional array करना तो 2 दफ़ा 2 आएंगे. Next, if is constantly changing in size. 2. Next, while calling function, the arguments are assigned to a parameter from left to right. जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो आर्गूमेंट साइन होते हैं टू पैरामीटर, पैरामीटर को आर्गूमेंट साइन होते हैं लेफ्ट टू राइट. जब हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं तो आर्गूमेंट पैरामीटर को साइन होते हैं लेफ्ट टू राइट. Next, classes defined inside other classes are called looped, nested. Our loaded none of the given option. Classes defined inside the other class. ये एक क्लास के अंदर क्लास तो उसको हम कहेंगे nested क्लास. जैसे हमने पढ़ा है nested loop, तो if के अंदर if तो उसको nested if as जो भी उसको हम कहते थे. तो इसमें क्या है कि क्लास डिफाइंड इनसाइड अदर क्लास. क्लास के अंदर क्लास के अंदर एक और क्लास डिफाइन हो रही है तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड. Next is 73. If we define an identifier with the statement as define PI 3.14 ये रिपीट हो गया है. Next 74 देखते हैं. Each value is returned by the destructor of a class appointed to a class, an object to a class, a status code determining whether the class was destructed. Destructor do not return a value. So which value is returned by the destructor of a class? Destructor do not return a value. Next is 75. Every class contains constructor, destructor, both A and B or not. तो इसका correct option है both A and B, constructor and destructor both. Next is 76. A template function must have one or more than one argument. Only one argument, zero argument, none. So one or more than one argument. Next is 77. Structured querying language is used for database management, network writing, operating system, none. Correct option है database management. When a call to user-defined function finishes, the variable defined inside the function stays in the instance false. Next,
The residence of an operator can be changed to operator overloading false. Next, 18. The read operator is used to return memory to be stored, which is allocated by the new operator. Next. Pointer is a variable which stores data, memory addresses, data type, values. Pointer is a variable जो कि स्टोर करता है memory address को pointer memory address को स्टोर करता है. Next. All preprocessor directives are started with a symbol. जितने भी preprocessor directive है वो hash से start होते हैं. Next, the number 544.53 must be stored in dash data type. In the integer, you short float your character floating data type. Next, a template function can have different types of argument too. Templates class cannot have a static variable false. Which of the following is used with bit manipulation? Signed integer, unsigned integer, signed double, unsigned double. So unsigned integer is used to bit manipulation. Next, structure is the collection of dash under a single name. Only function, only variable, both function and variable yaban. Structure is a collection of only variable under a single name. We can also do conditional complication with preprocessor directives too. Next, first symbolic construct has been defined. It will be an error to define it again. Cool. The code is written is to dash the program, implement the program. Template are not type same false. Template are not same to the for document is dash by type sequential file, random access file, data file, report file. Store document is random access file by type. By 93, which of the following is not preprocessor directive name of sticking to गया The return type of operator function must always be void once. Number 95. What does this represent? The current function of the class, the current pointer of the class, the current object of the class, or value of a data member. Oh, ये वापस represent करते हैं the current object of the class. 96 है. The statement cin.get is used to read a string from keyboard, read a character from keyboard, read a string from file, read a character from file. तो cin.get use करता है read a character from keyboard. Next है C++ is a sensitive language too. Next, which one of the statement given below is equivalent to sum plus is equal to j multiplied by j? Sum is equal to sum plus j multiplied by j. Next, all element of an array must be of different data type. Same data type, row data type, character data type. To constant and same data type. In C++, now character is represented as backslash module C as static D static C. So backslash n.